बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 गुड बाय मिस्टर चिप्स से है। नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 14 है बेटा, तो आप लोगों ने बुक्स अपने पास ओपन रखनी है ताकि हम जब इसकी ट्रांसलेशन को स्टडी करें, इसके सिनोनिम्स और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नोट डाउन करें, तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए। गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 14 है। तो उसका जो नाम है बेटा, उसको पहले नोट कर लीजिएगा। चैट्रिस डेथ, चैट्रिस की मौत है, एंड चिप्स एज एक्टिंग हेड। और चिप्स जो है वो एज ए एक्टिंग हेड जो है वो अब ब्रुकफील्ड में काम करेगा। तो इसके मुतालिक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्लीज ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 14। He still kept on his rooms with Mrs. Wickett. Indeed, he still lived there. But every morning, about 10:30, he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. He felt very fit, and actual work was not taxing. Taxing जो है वो थका देने वाला होता है, बोझल होता है, तो इसके लिए सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं टायरिंग। टैक्सिंग, टायरिंग। जो काम था वो इतना ज्यादा बोझल करने वाला ना था। Just a few forms in Latin and Roman history, the old lessons, even the old pronunciation, the same joke about lex canulia. There was a new generation that had not heard it, and he was absurdly gratified by the success it achieved. Absurdly, foolishly, बेवकूफाना तौर पर, gratified शुक्रगुजार होना, thankful. He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance. Appearance कारकर्दगी को कहते हैं, performance. They all said how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly. They did not guess how closely he had kept in touch from across the road. He was a grand success altogether. In some strange way he did, and they all knew and felt it. Help things. For the first time in his life, he felt necessary to something that was nearest his heart. There is no sublimer. Sublimer आला को कहते हैं, उम्दा, नुमाया, मुमताज, great, majestic, glorious, excellent. Sublimer, great, majestic, glorious. इसके लिए सिनोनिम आप लिख सकते हैं great, glorious, glorious, majestic, majestic, majestic. तो ये इसके लिए सिनोनिम्स हैं। Feeling in the world, and it was his last. At last, he made new jokes too about the OTC and the food rationing system and the anti-air raid blinds. Blinds कहते हैं curtains, पर्दे, that had to be fitted on all the windows. There was a mysterious kind of wrestle that began to appear on the school menus on Mondays, and Chips called it abhorrendum. Abhorrendum कहते हैं काबिल नफरत, detestable. And wrestle क्या है? Wrestle जो है a kind of cake, कीमे के बने हुए होते हैं, तो वो चिप्स जो है उनको बड़ा लाइक भी करता था। Meat to be abhorred, यानी जो है ना, चिप्स कॉल्ड इट एबोरेंडम। चिप्स उसको बहुत पसंद ना करता, उसने उसको काबिल नफरत कहा, क्योंकि मीट टू बी अबहॉर्ड, मीट से नफरत किया जाना चाहिए। द स्टोरी वेंट राउंड हर्ड चिप्स लेटेस्ट। Chattris fell ill during the winter of 1917, and again for the second time in his life, Chips became acting head Brookfield. Then in April, Chattris died, and the governors asked Chips if he would carry on for the duration. He said he would, if he would refrain from appointing his officially from that last harbor honor within his reach at last. He shrank instinctively. Instinctively फितरतन कहते हैं, naturally इसके लिए word use करेंगे आप, feeling himself in so many ways unequal to it. He said to Rivers, you see, I am not a young man, and I don't want people to expect a lot from me. I am like all these new colonels and majors you see everywhere, just a wartime fluke. Fluke कहते हैं stroke of luck, खुशकिस्मती से. A rancor, that all I am really.
1917, 1918, Chips lived through it all. He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with plaints and requests. Plaints, complaints. Out of vast experience had emerged a kindly, gentle confidence in himself. To keep a sense of proportion, that was the main thing. So much of the world was losing it, as well keep it where it had, or ought to have a congenial home. Congenial, nice, umda, khushgawar. On Sundays in chapel, it was he who now read out the tragic list, and sometimes it was seen and heard that he was in tears over it. Well, why not? The school said he was an old man. They might have despised anyone else for the weakness. Despise, look down upon, nafrat se dekhna, hate, nafrat karna. One day he got a letter from Switzerland, from friends there. It was heavily censored but conveyed some news. On the following Sunday, after the names and biographies of old boys, he paused a moment and then added, those few of you who were here before the war will remember Max Staffel, the German master. He was in Germany visiting his home when war broke out. He was popular while he was here and made many friends. Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week on the Western Front. He was a little pale when he sat down afterwards, aware that he had done something unusual. He had consulted nobody about it. Anyhow, no one else could be blamed. Later, outside the chapel, he heard an argument. On the Western Front, Chip said, does that mean he was fighting for the Germans? I suppose it does. Seems funny then to read his name out with all the others. After all, he was an enemy. He was an enemy. Oh, just one of Chip's ideas. I expect the old boy still has him. Chips in his room again was not displeased by the comment. Yes, he still had him. Those ideas of dignity and generosity that were becoming increasingly rare in a frantic world. Frantic, mad को कहते हैं. जुनूनी, पागल, mad, दीवाना, frantic. And he thought Brookfield will take them too from me, but it would not from anyone else. Once asked for his opinion of bayonet practice being carried on near the cricket pavilion, he answered, bayonet practice जो है ना संगीन लड़ाई होती है, काफी जो है ना कह लें कि संगीन से लड़ाई है, डैगर जो है उससे लड़ाई कह लें, लाइक अ स्वर्ड जो है तलवारबाजी, तलवारों से लड़ाई जो है तो उसको कहा जाता है bayonet practice. Being carried on near the cricket pavilion, he answered with that lazy, slightly asthmatic intonation that had been so often and so extravagantly imitated. Imitate नकल करना होता है, कॉपी करना. It seems to me a very vulgar way of killing people. तो लोगों को जो है चिप्स का इसके मतलब क्या ख्याल था कि ये ऐसे लगता है जैसे कि ये बहुत बेहुदा वे है, तरीका है लोगों को कत्ल करने का. The yawns, yawn कहते हैं स्टोरी, टेल, बहुत अच्छा सिनोनिम है. yawn, स्टोरी, STORY, स्टोरी, टेल, TALE, टेल. The yawn was passed on and joyously appreciated how Chips had told some big brass hat from the war office that bayonet fighting was vulgar, just like Chips, and they found an adjective for him, an adjective just beginning to be used. He was pre-war. और उसके लिए एक एडजेक्टिव, एक खसूसियत इस्तेमाल की गई थी चिप्स के लिए, और चिप्स को कहा गया था प्री वॉर, यानी ये जंग से भी पहले का है. तो यहाँ पर बेटा चैप्टर नंबर 14 हमारा एंड होता है. अब इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे. मैंने वो लिख भी दिए हैं, मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर भी करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज चिप्स रूटीन आफ्टर रिजॉइनिंग द स्कूल, यानी जब उसने स्कूल को रिजॉइन किया था दोबारा तो चिप्स की रूटीन क्या थी. ये पहले जब हमने स्टार्ट में पढ़ा है एवरी मॉर्निंग वाली जगह पे, तो वहां पे आपको ये मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डिड चैट्रिस डाई, चैट्रिस जो है उसने कब उसकी डेथ हुई. और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके साथ अटैच है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड चैट्रिस डाई, कि चैट्रिस जो है
उसकी डेथ कैसे हुई ये मैंने अलग लिख दिया था। इसके साथ ही ये आ सकता है व्हेन एंड हाउ डिड चैट्रिस डाई, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं व्हेन एंड हाउ चैट्रिस डाई। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज चिप्स ओपिनियन अबाउट बेनेट प्रैक्टिस, ये लास्ट में आया है जो मैंने बताया बेनेट प्रैक्टिस। चिप्स said about the Bennett practice that it was a vulgar way of killing people, कि लोगों को कत्ल करने का यह सबसे बेहुदा तरीका है। What is wrestle? Wrestle क्या है? Wrestle was the kind of cake of minced meat, के गोश्त जो है कीमे के गोश्त के केक हैं जो के बनाए जाते हैं। Why did Chips not accept the offer of permanent headship at Brookfield? Brookfield में उसने दोबारा हेडशिप की ऑफर जो है उसको कबूल क्यों ना किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है Why was Chips called pre-war? चिप्स को जो है वो प्री वार क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें मौजूद है हाउ डिड चैट्रिस डाई, तो ये मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर द सेम क्वेश्चंस। इनके लिए व्हेन एंड हाउ, पहली बात ये कि इन 1917 चैट्रिस डाइड इन 1917 ड्यू टू डायबिटीज। एक तो उसको डायबिटीज थी जिस वजह से, इसके अलावा ड्यू टू डायबिटीज ओवरवर्क की वजह से भी जो है उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड चैप्टर नॉवल के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने तैयार करना है। ट्रांसलेशन हमने उसकी जो है वो पढ़ ली है, आप लोगों ने उनको सिनोनिम्स जो रिलेटेड है उस चैप्टर में उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तैयार हो जाएं। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। आप लोगों का